हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये यूनिफाई प्रोटेक्टर कैमरास G3 इंस्टेंट, G3 फ्लेक्स एंड ये इमो 360 अमेजोन का जेनेरिक ब्रांड, ये ऑनली सपोर्ट करता है। ये सारे कैमरास यूनिफाई प्रोटेक्ट पे मैनेज हो रहे हैं। तो आज के वीडियोस में मैं यूनिफाई प्रोटेक्ट को इंटीग्रेट करूंगा यूनिफाई होम ब्रिज के साथ एंड देन इसमें यूनिफाई कंट्रोलर का प्लग इन इंस्टॉल करेंगे एंड देन वी कैन मैनेज द कैमरा थ्रू एप्पल होम किट। आपके आईफोन में होम ऐप के साथ आप यूज कर सकते हैं ऑन योर एप्पल वॉच, आईपैड। सो ये सारे कैमरास जो यूनिफाई प्रोटेक्ट में अडॉप्टेड है, मैनेज है, यू कैन मैनेज थ्रू एप्पल होम ऐप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So this is the GitHub page, github.com, where you can check the Homebridge. So Homebridge is a lightweight node you can run on your home network that emulates the iOS HomeKit API. So it supports plugins. So today we'll install the plugins of UniFi Protect. So you can install on Raspberry Pi, Linux, Mac OS, Windows 11, 10, Docker, even on the Synology. Right now I will install on the Proxmox as an LXC container. So with the help of Proxmox helper script, I will run the command and I will proceed with the installation. So on the shell and then I will go to the Proxmox helper script. As you can see, this is a helper script. I will just copy the command and I will just go ahead and paste the command and then it will start installing the Homebridge. I will just keep the default install, which will have 1 core CPU and 1 GB of RAM. As you can see, it is showing right now. It's asking me which storage pool you want for the container template. So I will just use the SMB UNAS as a CIFS. So I will just use that and I will install, and this process will take some time to install. Once it is installed, I can access on a browser with the IP address HTTP and the port 8581. So as you can see, it shows all the options, like it asking to me upgrade the LXC container. So it will update and it will create Homebridge repository, everything, and then I can proceed on a browser to access the Homebridge.
So once the Homebridge is installed and you have added the UniFi Protect plugins, then you have to go to the iPhone and open the Home app, and then you can add a new home. Here I will give the name UniFi Protect camera, and then I will just scan to the screen. It just says add an accessory, so I will just scan to the bridge and I will add to the home. Once you add it to the home, it will ask what bridge location you want to set. I will just click as in create a new room and I will give the name as office shop. Now I will click on continue and I will identify for each cameras, adding the UniFi cameras as an office shop. So I have 8 cameras, so I will click similarly for each cameras to identify and continue. So you have seen that all the cameras are adding right now. 5 cameras are added of 8 connected cameras. You can see this is the third party cameras which is managed on the UniFi Protect NVR. So you can use that. This is the TP-Link cameras and all 8 cameras has been added, and now click on done. So now you can see the cameras and even you can check for each cameras everything. So right now I was recording that part. As you can check here, this is the third party cameras. Right now it says camera is not responding, but it takes some times to show that. So this is how you can check that. This is showing the G3 instant cameras. This is the TP-Link Tapo cameras. As you can check here, it is showing live streaming. You can manage everything through the Home app. So that's it. आपने देखा कि यूनिफाई प्रोटेक्ट को हमने इंटीग्रेट किया होम ब्रिज के साथ एंड देन यूनिफाई कंट्रोलर प्लगइन उसमें इंस्टॉल किया एंड देन आप मैनेज कर सकते हैं यूनिफाई कैमरा को होम ऐप के साथ थ्रू एप्पल होम किट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये यूनिफाई होम ऐप, यहाँ पे मैंने एक्सेसरीज ऐड किया है, अपना एक न्यू होम ऐड किया एज ए न्यू रूम एज एन ऑफिस शॉप। सो यहाँ पे सारे कैमराज आपको दिख रहे होंगे। ये मेरा आउटडोर कैमराज है एंड ये मेरा इंडोर कैमराज है एंड देन these 3 cameras are the third party। ये है TP-Link का Tapo C310 जो वहाँ पे लगा है, जो ये रैक को मॉनिटर करता है। एज यू कैन सी माई रैक एंड देन इसके बाद ये IMOU 360 डिग्री कैमरा है जो Amazon से परचेज किया था मैंने एंड इसके अंदर स्मार्ट ट्रैकिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। एज यू कैन सी इट इज ट्रैकिंग द मोशंस। और उसके बाद आप देख सकते हैं ये भी एक कैमरा है 2K कैमरा फॉर द सेम IMOU 360 degree। So this is how simple way you can adopt the cameras। I mean all cameras is already adopted on the UniFi। आप integrate कर सकते हैं easily Homebridge के साथ and then you can monitor your cameras if you are home, if you are away through your phone, through the Apple Watch pad। So ये simply easily integrate हो जाएगा and आप easily इसको manage कर सकते हैं। So I think that's it for the today's video। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज hit the like button and make sure you comment। Thanks।